A very good morning to all of you. How are you all? I hope you are all well and doing great at your places. So, today we are going to start a new topic, that is excretion. That is excretion. So, before starting this topic, I want to tell you what we have discussed. So, we have already discussed the gaseous waste which are generated during the photosynthesis, which generate during the process of photosynthesis and the respiration, which we have already discussed in your last class. Now, in this class, we are going to discuss the metabolic activity. So, in our body, there are some metabolic activity are done. Okay, by this metabolic activity, the nitrogenous waste generate. Due to this metabolic activity, the nitrogenous waste is developed, which we need to be removed out from our body. So, what is the excretion process? Excretion process is the main of the removal of this waste material from our body. So, if we talk about the definition of excretion, so it is the biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is known as excretion. तो और क्या होता है कि different organism use a different strategies to do this. Means different organisms do the excretion in a different manners. If we talked about unicellular organism, if we personally talked about the unicellular organism, so they do diffusion by the or they remove they remove the waste material by the process of diffusion, simple diffusion. And if we talked about the multicellular organisms, so they have a specialized organ to perform same function. So this is about the unicellular and multicellular organism. Now we are going to discuss what we are going to discuss is excretion in human beings, how the human beings do their excretion. ठीक है, तो excretory systems of human beings include some pairs, some parts like pair of kidney, pair of uterus, urinary bladder and urethra. These body parts they includes. So kidney or this is very important. You have to know this question is asked many times in the exams, where kidney is located. So I want to tell you, kidney is located in the abdomen, on the one on either side of the backbone. ठीक है, और यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, पासेस थ्रू द यूरेटर. जो हमारा जो यूरिन है जो किडनी में प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पास हो रहा है थ्रू यूरेथ्रा टू कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, विच इज़ स्टोर अंटिल द रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा. जो हमारा यूरेथ्रा है जब तक वो उससे रिलीज आउट नहीं हो जाएगा तब तक वो कहाँ स्टोर रहेगा, तब तक वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हाउ यूरिन प्रोड्यूस्ड. ठीक है, हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. द पर्पज ऑफ मेकिंग इज यूरिन टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड टू फिल्टर आवर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर ब्लड. So just we have talked about the CO2 is removed from the blood in the lungs in a nitrogenous way such as urine, uric acid, and removed from the blood in the kidney. It is then no surprise that basic filtration of unit. So there is a thing which we have to know. The structural and functional unit of kidney is what we have. This is always asked. So what is the structural and functional unit of kidneys? So the structural and functional unit of kidney is nephrons. Nephron is the structural and functional unit of structural and functional unit of kidney. Okay, so next thing we are going to discuss, this is about nephron. This is the structure of nephron. Okay, this is the structure of nephron. This is very important. And see this diagram, the diagram 6.13 and diagram 6.14. These two diagrams are very important. You have to understand this, and each and every line you have to know, you have to practice this. This is very important. So next we are going to discuss is each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of coiled tubes known as Bowman capsules. What it is said to be? Bowman capsule. So glomerulus, here is glomerulus and Bowman capsule. Collectively both are called as Malpighian capsule. Collectively it is known as Malpighian capsule. Okay, and that collect the filtration. Each kidney is large number of these filtration units called as nephrons, which we have already discussed, which is packed close together. Some other substances is initially filtrates like glucose, amino acids, salt, and measure amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube.
ठीक है। तो जो आपका यूरिन होता है वो आपका रीअब्जॉर्ब्ड होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस, ठीक है। देखिए हमेशा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमाउंट ऑफ यूरिन इज रीस्टोर्ड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर क्या है, द एक्सेस वाटर देयर इज इन द ब्लड इन द बॉडी एंड हाउ मच द डिजॉल्व वेस्ट देयर इज to be excreted. These are the two factors in which it depends how much amount of water is going to be reabsorbed. The urine forming in the kidney eventually enter in a long tube urethra which collect the kidney, which connects the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of expanded bladder leads to the urge of pass it out through the urethra. द ब्लैडर इज़ मस्कुलर, जो आपका ये जो ब्लैडर है वो क्या है, मस्कुलर है, विच इज़ कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। आपका ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका मस्कुलर ऑर्गन है, ये विच इज़ कंट्रोल बाय आवर नर्वस सिस्टम्स. So we have as a result we have usually control the urge of urinate. ओके तो इसके बाद हमें यूरिन का वो प्रेशर फील होता है. तो ये हो गया आपका ह्यूमन बीइंग का. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट. So if we talked about plant, तो plant use completely different strategies for the excretion than those the animals. तो plants जो है वो totally different method use करते हैं compared to animals. Okay, so oxygen itself can be removed. Oxygen itself can be thought or the waste products generated during the photosynthesis. ठीक है, which is discussed earlier in the plant deal of oxygen as well as carbon dioxide. They have rid excess water. अगर हम वाटर की बात करें तो excess water कैसे रिमूव्ड होता है, तो we have already discussed about transpiration. को excess water जो होता है वो आपका transpiration के थ्रू रिमूव्ड आउट होता है. टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल. जैसे हमने पढ़ा होगा कि प्लांट का, ये आपने क्लास 9 में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो बार्क ऑफ द ट्री होता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का वेस्ट मटेरियल होता है. प्लांट का वो एक तरीके का वेस्ट मटेरियल होता है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ डेड सेल. टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल. पार्ट्स ऑफ द लीव की पार्ट्स, ठीक है, वो भी एक तरीके का वेस्ट मटेरियल का काम करती हैं. जब वो मतलब क्या होता है कि जब वो उनका दे हैव इवन लॉस सम पार्ट ऑफ द लीव्स. मेनी प्लांट यूज वेस्ट प्रोडक्ट एज द स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स. कुछ प्लांट जो होते हैं वैक्यूल्स, सेलुलर वैक्यूल्स की तरह वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं. फिर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ. ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीव्स हैं वो एज अ वेस्ट मटेरियल यूज़ करती है. जब वो गिर जाती है तो उनका वेस्ट मटेरियल अपने प्लांट बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है. ठीक है, रेनिन गम्स. और फिर क्या होता है, प्लांट also excrete some waste product in the soil around them. ठीक है, तो plants also excrete in this ways. So this is the excretion in plants. So we have discussed about the excretion process. What is excretion? How unicellular organisms do their excretion. Multicellular organisms have a specialized structure. How excretion occur in human beings, which diagram is important. Okay, how the excretion in plants occur. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली. नेक्स्ट यू हैव टू कंप्लीट व्हाट, यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइज विथ योर नोट्स. ठीक है, इन योर नोटबुक, इन योर बायोलॉजी नोटबुक. तो नेक्स्ट ऑन योर नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ ऑन फ्राइडे. तो आई विल चेक दिस आउट. ओके स्टूडेंट, दिस क्लास इज ओवर फॉर टुडे. दिस चैप्टर completes. If you have any doubt related to this chapter, so you can ask me. Okay, thank you for the class.